Assalamu alaikum. In this video lecture, I will start delivering the pharmacology of epilepsy. Before I really go into the pharmacology, before I really explain you all the drugs that are really good for the treatment of the epilepsy, we need to have a little idea about the epilepsy, what actually it is, right? And the main problem in the epilepsy, that is seizures. What are the seizures, what are their types, and everything. So let's start with the epilepsy first. What is epilepsy? We'll go to the definition first, but what about the incidence? It is the fourth most common neurologic disorder after migraines, stroke, and Alzheimer's disease. Right? हम न्यूरोलॉजी में मेडिसिन के अंदर पढ़ते हैं ना, माइग्रेन्स, स्ट्रोक, अल्जाइमर्स डिजीज़, ये तो टॉप नॉच हैं ही. लेकिन at number 4, the most common neurologic disorder is epilepsy. But by the mercy of Almighty, मिर्गी अब लाइलाज मर्ज नहीं है. ठीक है, epilepsy has its treatment. Okay, epilepsy, it's not a single entity by definition. It is the assortment or combination of different seizure types. Combination of डिफरेंट सीजर टाइप्स. और सब सीजर्स में एक चीज़ कॉमन होती है कि जो न्यूरॉन्स हैं ना, दे डिस्चार्ज, दे फायर सडनली, एक्सेसिवली एंड सिंक्रोनसली. सो व्हाट इज एपिलेप्सी? इट कैन नॉट बी डिफाइंड एज द सिंगल एंटाइटी. इट इज़ नॉट एक्चुअली a single entity. It is the combination of different seizure types. I'll tell you what are seizures, but for now you understand epilepsy is something in which you come to see seizures. Okay, and in all the types of seizures, the common thing is, in all the types of seizures there is excessive firing of neurons, cerebral neurons, and the firing of neurons is sudden, very much excessive, and synchronously. All the neurons fire together in a synchronous fashion. Okay, is it really difficult to understand? No, I don't think. Epilepsy is not a single entity. Combination of different seizures. एक पेशेंट है जिसको 2-3 तरह के सीजर्स होते हैं. कम्बिनेशन इज सेड टू बी द एपिलेप्सी, देसी जुबान के अंदर. ठीक है, ओके. व्हाट हैपन्स व्हेन देयर आर सीजर्स? दैट इज अ सडन एक्सेसिव सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ द सेरिब्रल न्यूरॉन्स. इट विल लीड टू फॉलोइंग प्रेजेंटेशन. ओके, in general. So if you want me to explain it in the very easy way, then you see this is the cerebrum. Okay, the two hemispheres, or you may consider it your brain. You can see in the cerebrum. Okay, if you take this particular portion of the cerebrum, in this particular portion of cerebrum, lots of neurons are present, and if let's suppose there are 100 neurons present, for example, and all the 100 neurons are firing very much excessively, and their action potential is very quick, their threshold has become very low, they are firing very rapidly, excessively, synchronously, तो आपको एक चीज़ होगी जिसका नाम है सीज़र. और मुख्तलिफ सीज़र्स अगर प्रेजेंट हों एक साथ तो उसको हम मृगी कहते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं. ठीक है, सो इफ़ देयर इज़ द एक्सेसिव फायरिंग ऑफ द न्यूरॉन्स, दैट इज़ द सीज़र्स, what will happen to the patient? What will be the presentation? Number 1 is the loss of the consciousness. Loss of consciousness, जो कॉन्शियस एक्टिविटी होती है, जो सुनाई देना और परसेप्शन किसी चीज़ का और देख पाना, वो सारी चीज़ें जो कॉन्शियस में स्टेट में आती वो नहीं रहती. एबनॉर्मल मूवमेंट्स, हाथ पैर का चलना. उसके अलावा एटिपिकल और ऑड बिहेवियर, ऐसी हरकतें करना जो कि बड़ी एटिपिकल सी नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं करता. ठीक है, इसके अलावा द परसेप्शंस आर वेरी मच डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस, एंड ऑल दीज अकर्स. डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, जैसे कि इसकी एक अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है. मैंने जो एपिलेप्सी का पेशेंट देखा है वो क्या करता है, अपनी जो ज़ुबान है ना उसको अपने दांतों के नीचे दबा देता है. So teeth are actually hurting his or her tongue, but still he keeps on doing this. So from this you can really see the perceptions are very much distorted. All this occur for limited duration. एक एपिसोड आता है सीजर्स का, एपिलेप्सी का,
और उसके बाद वो पेशेंट सही हो जाता है, कुछ मिनट के लिए चलता है। और अगर इसको आप अनट्रीटेड छोड़ दोगे तो अभी 2-3 मिनट के लिए ये अटैक आया है, फिर शायद कल भी आए या शायद आज ही के दिन में दोबारा भी आ जाए, ठीक है। तो वी हैव टू ट्रीट इट। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बेटा? You understand the difference? Epilepsy is the entire combination. Epilepsy is not the single entity. When different seizure types present in the same individual, we say he is suffering from epilepsy. And in all the seizures, what is the common thing? Excessive sudden synchronous firing of the neurons. Okay? अब डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा बेटा अफेक्टेड है, उस हिसाब से पेशेंट प्रेजेंटेशन होती है। जनरली तो ये एक प्रेजेंटेशन होती है, लेकिन अब लेट सपोज साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग विल डिटरमाइन द सिम्टम्स। ये एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग हो कहाँ पे रही है, ओरिजिन क्या है, सीजर ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है। अगर मोटर कॉर्टेक्स में पैथोलॉजी है और मोटर कॉर्टेक्स में पैथोलॉजी की वजह से एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग हो रही है मोटर कॉर्टेक्स में, व्हाट विल बी द सिम्टम्स? सीजर की प्रेजेंटेशन क्या होगी फिर? एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ द पेशेंट और द जनरलाइज्ड कन्वल्जेंस। यू अंडरस्टैंड कन्वल्जेंस बेटा? कन्वल्जेंस आर, आई कैन से, just a second, convulsions are the contractions of the muscles, the tone of the muscle, the contractions and the relaxation of the muscles. मसल का अकड़ जाना, स्टिफ हो जाना, फिर रिलैक्स हो जाना, these are the convulsions, right? And if the underlying pathology is present in the partial or occipital lobe, I mean the abnormal firing is originating from the parietal or occipital lobe, or if more easily, if I say if the seizure is originating from this portion, then the presentation will be a little different. Like patient will complain more of hallucinations, visual hallucinations. Nobody is sitting in front of me, but still I say, yeah, somebody is sitting in front of me. Auditory hallucinations, right? Nobody is calling me, but still if I say somebody is calling my name, auditory hallucination. Olfactory hallucinations, no any good or bad smell is there, I can perceive, but still if I say there is kind of smell, I can, yeah, smell. So these are the olfactory hallucinations. So depend करता है कि ब्रेन का कौन सा सेरिब्रम का हिस्सा है जिसमें पैथोलॉजी है, जहाँ पे एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है, उस हिसाब से प्रेजेंटेशन आती है सीजर की, ठीक है। तो बात को थोड़ा और आसान करते हैं। सीजर्स, व्हाट आर द सीजर्स? सीजर्स आर द सडन एक्सेसिव सिंक्रोनस डिस्चार्ज ऑफ द सेरिब्रल न्यूरॉन्स। समझ आई बात? अगर ब्रेन में किसी हिस्से के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स एक्सेसिवली, नॉर्मल से ज़्यादा सिंक्रोनसली डिस्चार्ज करें, फायर हों, तो उस कंडीशन को हम सीजर कहते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होगी पेशेंट की? डिपेंड करता है कि कौन सा हिस्सा सेरिब्रम का इन्वॉल्व है। और मुख्तलिफ सीजर्स के कम्बिनेशन को हम एपिलेप्सी कहते हैं, ठीक है। अब समझ आई बात बेटा? अब तो आसान हो गया बच्चों। सो आई होप इट इज़ ईजी नाउ व्हाट इज़ द एटियोलॉजी ऑफ सीजर्स? Let me tell you. You must be thinking na ke the reason behind the seizures is the abnormal firing, excessive firing of the neurons. You must be thinking कि क्यों excessive firing क्यों? Let's suppose this is the portion of the cerebrum as I drew it previously. Yeah, you see if this portion के जो neurons हैं 100 neurons for example, they are firing excessively, leading to seizures and epilepsy. The question is why excessive firing? In most cases, the identifiable cause is not known. But it may be due to the abnormal firing may be due to underlying genetic mutations, may be due to some structural abnormality or some metabolic causes. बहुत सारे लोगों में ट्रॉमा की वजह से भी पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग स्टार्ट होती है, सीजर्स होते हैं, एपिलेप्सी होती है। बहुत सारे लोगों में जेनेटिक होती है। या माई फ्रेंड केम टू मी, शी वॉज 25 years old. He said when my mother was young enough, in her young 20-25-year-old, she said my mother also had epilepsy. And she, my friend, also came to me with the same presentation her mother used to have.
Epilepsy, it is genetic. It is genetic. Okay. So yeah, so this underlying etiology is not well defined, but still you can consider some, structural, genetic, metabolic causes, or maybe trauma. दिमाग पे बहुत बड़ी चोट लगी थी, उसके बाद जो है वो डॉक्टर साहब आज से 5 साल पहले इसका जहन पे बहुत बड़ी चोट लगी थी, और उसके बाद अभी ये पेशेंट को झटके आते हैं मिर्गी के. तो ये इस तरीके की होती है नॉर्मली प्रेजेंटेशन. Okay, so now after this I have to tell you another very interesting term, that what is primary focus. What is meant by primary focus? Let me describe. The primary focus beta is, okay, let me show you. This is the brain substance entirely, and lots of neurons, obviously millions of neurons are present in this. This is the brain tissue, and can you see this is the group of neurons, one group of neuron, another group of neuron, another group of neuron. So the primary focus is the abnormal firing of small population of neurons in a specific area of the brain. In a specific area of brain, abnormal firing of small population of cells. Look, one population of cells, another population of neurons, another population of neurons, they are firing abnormally. They are firing abnormally at the specific site, at a specific location in the brain, right? This is said to be the primary focus. This is said to be primary focus. Okay. They fire abnormally. They fire abnormally, leading to seizures. But you know what? They can be triggered further by changes in the physiologic factors. बहुत सारे physiologic factors की वजह से ये trigger हो सकते हैं, and they can fire very much abnormally, leading to repeated seizures, repeated episodes. What physiological factors can trigger these foci? Like alteration in the blood gases, pH, electrolytes, right? If there is alteration in the electrolyte levels, sodium, potassium levels, magnesium level, calcium levels, and if there is alteration in the blood pH, or very importantly on the next page, let me show you if there is alteration in the blood glucose. So if you are a sugar patient of the diabetic mellitic, be careful and try to keep your sugar levels in a certain range which is normal, because alterations in the blood glucose very high, very low, it will lead to triggering of the small foci in the brain, and you will be suffering from the episodes of seizures. So diabetes with epilepsy can be a nastiest combination in the world. Nastiest. शुगर वाले लोगों को वैसे भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है, वो एपिलेप्सी को नहीं झेल पाते. Changes in the environmental factors like sleep deprivation, alcohol intake, stress लेना. I have seen patients. I even have in real I have seen a patient, one of my friends, her mother, she they actually had some history of epilepsy. So after her mother's death, he actually suffered from lots of stress. So due to that stress, that foci in her brain was like kicking all the times, and it triggered the seizures and repeated episodes of seizures she had. So stress is a very big role. Be careful if you have bit of genetic risk, or you actually have epilepsy, then do not take stress, because it can actually trigger small foci in your brain, and you can have repeated seizures, repeated episodes. Okay, seizures can further be precipitated by illicit drugs use, tumor in the brain, injury to the head, low sugar levels, infection of the meninges, rapid withdrawal of alcohol from an alcoholic. ठीक है, रैपिड विड्रॉल नहीं, अगर पहले बात तो विड्रॉ करना ही नहीं चाहिए. अल्कोहल विड्रॉ करना चाहिए, इट इज़ वेरी मच हार्मफुल, लेकिन एक बार अगर आप इस पर काइंड ऑफ रैपिड विड्रॉल कैन हैव वेरी नेस्टीएस्ट इफेक्ट्स ऑन द एपिलेप्सी. रिपीटेड सीजर्स होते हैं, इसको विड्रॉ कर रहे हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट में विड्रॉ ना करें, अगर कर भी रहे हैं तो उसको काफ़ी ग्रेजुअली टेपर करें. इसके अलावा वन मोर थिंग बेटा, that look, there are two things beta now. Number one thing is, if this is the portion of your brain and there is some pathology right over here, due to this pathology, genetic, metabolic, structural, whatever,
there is the abnormal firing of neurons, right? Abnormal firing of neurons leading to seizures and ultimately epilepsy. And you don't know what exactly is the cause, okay? In this case, you provide the patients with the anti-seizures, anti-epileptics, and the symptoms are relieved. But remember, if the seizures are not due to the underlying pathology, if the seizures are due to some other reasons, like there are so many drugs जो कि seizures कराती हैं, in that case you don't need the treatment, don't need the anti-seizure medication. You just have to avoid that factor which is causing seizures. जैसे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो कि सीजर्स कराती हैं, ठीक है? In that case you don't need the chronic therapy. But if the primary cause cannot be corrected, like the underlying pathology here, genetic cause, metabolic cause, whatever problem here is, in that case you need the anti-seizure medications. You understand, beta? Let me tell you once again. If the primary cause of the seizures is known, then you don't need to give the anti-seizure medications. Why? Because you know the cause. You just have to avoid that cause. For example, if you develop the seizures due to some drugs, you know the cause, na? The cause of the seizures is taking some other drugs who have their side effect of causing seizures. So what you have to do is just stop those drugs which are causing seizures. You don't have to provide the patient with the anti-seizure or anti-epileptic drugs. Okay? But if the seizures are due to some pathology here and that pathology is not known, in that case you can't do anything. You just have to provide the patient with anti-seizure medications. Okay? क्योंकि कॉज पता ही नहीं ना किसको अवॉइड करेंगे. ठीक है बच्चों, इस तरीके से. अब एक और छोटी सी चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है. दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सीजर्स. डिफरेंट तरह के सीजर्स होते हैं एपिलेप्सी में, और फिर इसकी हम मेडिकेशन की तरफ चलेंगे, एंटी सीजर्स की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस.